बोल दे फर्स्ट टाइम। AST बोला मैंने। चलो लाइव स्टार्ट कर दिया है, अब डिस्कॉर्ड को कनेक्ट करना है मुझे, उसमें पॉप आउट तो हो जाएगा। Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? एड आ गई। नेवर स्किप एड ऑन XT। Okay, so we are live, and hello everyone to whoever has joined. Welcome to Explore the Earth's first live stream. I am Ismail. With me is Akshay. This is Akshay, and this is Saransh. We three run Explore the Earth. We are three friends who create travel videos, blogs, articles, and a lot more social media content around travel. We have been featured on we have been featured on Lonely Planet magazine for our adventures, and we are always on the go. So thank you for joining us. For those of you who don't know and are joining us for the first time, we welcome you, and to all our lovely subscribers and followers over the time, we thank you for your love and support, and thank you for joining us today. So for today's live, we have a lot of things planned. A few days back on our Instagram, we did a Q&A, like we asked our community whoever had any questions for us. So we are going to answer them. We are going to give some more updates about the upcoming trips that we have planned, which are pretty wild for us as well. And we have some trivia games, and we are going to share a few experiences from our past trips. So stay tuned. It's going to be about 45 minutes to 1 hour session. We hope you have a great time. Throughout this live, we are going to take questions from you all. So anything that you want to ask us, feel free to drop in chat. We are going to go to the chat time and again between few of these slots. So keep dropping them, and we are going to interact with you overall. अब वन स्पेशल नोट, ये हमारा पहला लाइव सेशन है. हमने बहुत मेहनत की है ये पूरा सेटअप करने में, लाइक टू हैव अ डिस्कॉर्ड कॉल, उसमें स्क्रीन शेयर करना, वो सब कुछ आपको रिकॉर्ड करके लाइव स्ट्रीम करना. सो फॉरगिव अस इफ वी मेक एनी मिस्टेक्स, थोड़ा बहुत बफरिंग का प्रॉब्लम आया या तो फिर एनी टेक्निकल ग्लिचेस, जस्ट मेंशन इन द चैट, विल ट्राई टू फिक्स देम. बाकी सब अच्छा जाए तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. So let's start first and foremost with the most recent trip that we did. Okay, a quick format इसका जो मैं कैसे जाने वाला हूँ, अभी तक मैं ही बड़बड़ कर रहा हूँ क्योंकि today for this live session I'm going to act as a host or a moderator, and we are going to take this through as a talk show. So rather than just us conversing randomly, we are going to like structure it a little bit. So इस वाले पे मैं होस्ट बन रहा हूँ और ये दोनों मेरे गेस्ट. बट आगे वाले वी आर गोइंग टू इनवाइट मोर पीपल ऑन दीज लाइव सेशंस. इवन इफ यू वांट टू लाइक जॉइन अस for any of these, feel free to hit us up and we'll review your pitches in the Oh, if you want to come right on audacity. okay, so first and foremost, we have some updates we want to share. These both, Akshay and Saransh, recently completed the Hampta Pass trek in Himachal Pradesh. So we are going to like relive a quick few moments from their trek before we go ahead. So if you have any questions about Hampta Pass, drop them in the comments, and these both will answer in this session. इसके बाद हम Hampta Pass के शायद questions ना ले, so better drop them now. Uh, Whoa. Firstly, I want to ask both of you guys, like, how was the overall? Actually, overall, छोड़ दो. Tell me the best moments that you had on this trek. Like, why this trek is you are going to remember this trek. I'll ask to Akshay first. Okay, so one of my favorite songs is Stairway to Heaven, and I got an experience very similar to that. हम एक just before the ascent to the pass, हम एक ridge पे चल रहे थे. वो ridge होगी कुछ 3 से 5 फीट की चौड़ी. उससे ज्यादा उसकी width कभी बड़ी नहीं है उस ridge की. और we were surrounded by clouds. एक साइड नीचे नदी थी, एक साइड नीचे खाई थी, और ना आगे ना पीछे हमें कहीं पे भी कुछ दिख नहीं रहा था. We were just walking towards the pass, and it was such a surreal experience ki I don't think I'm ever going to forget that. I think what you're mentioning, Ridge wala part, I have one clip. I'll just quickly screen share. So let's hope we can find that. One sec. मतलब just to put things in perspective, जो अक्षय रिज वाला बोल रहा है, there was like in certain points ऐसा था कि वो इतना पतला था कि there was this guy in our group जिसे ज्यादा डर लग रहा था, तो वो actually बिना नीचे देखे बस सामने देख के चलने की कोशिश कर रहा था कि उसे डर ना लगे.
हाँ वो थ्रिलिंग तो बहुत ज्यादा था Was that you Oh by any yes. chance? Yeah, on that guy के नाम पे तू बस. क्या Was that you by नहीं any chance? नहीं. That guy? See, you can see the guy in orange cap is holding the other guy's hand. He's talking about that one. Right. मस्त. Like पूरा मतलब vibe ये अलग ही पता लग है रहा है ये because क्वेश्चन मैं of. तेरे से पूछ सकता was it you but then again you never joined us on the trek Wow. So yeah, pretty wild landscape Yes. because of the whole fog and the whole atmosphere, I Yeah. guess. How about you, Saransh? how Like, that हाँ yeah, please continue. Like मैं तुझे तो ही पूछने वाला बेस्ट मोमेंट्स क्या रहे ट्रैक से. हाँ तो मतलब so जैसा अक्षय ने बोला रिच के जस्ट बाद was when you reach the Hampta Pass top हम्म. मतलब तो जब मैं सोचता हूँ कि like what was my top moment I think मेरे दिमाग में दो आते हैं एक when we actually just reached मतलब as much as reaching may not be the sole objective क्योंकि हम along the way enjoy कर रहे हैं पर जब पहुंचे ऊपर अलग ही लेवल एड्रेनलिन रश था आई थिंक सबसे पहली चीज जो मैंने ऊपर जाके करी थी वो था कि मैं जोर जोर से अक्षय की छाती ठोक रहा था वंस वी वर एट द टॉप मतलब मैं बाद में सोच रहा था इट मे जस्ट हैव बीन मोर देन ही कुड टेक एट द टाइम वैसे ही हम सांस कम ले पा रहे हो साइड पे और मैं जोर जोर से उसे मार रहा हूँ पर दैट वाज समथिंग लाइक रीचिंग एट द टॉप एंड स्पेशली तब जब विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी मतलब सिंस द टाइम वी स्टार्टेड ऑन दैट ब्रिज टिल द एंड विजिबिलिटी बहुत कम थी पर अलग लेवल फीलिंग थी और Yeah, उसके I बाद दूसरा think this is हाँ the बोलो moment like तुम टॉप पे ही लग रहे हो इसमें. हाँ. Uh, that's the whole group. Yeah, हाँ, बस वो हाँ छोटी visibility सी तो. जगह that's a pass. अच्छा, so पूरे it's 3-4 दिन की actually. मेहनत is for this tiny piece of land. Yeah. अच्छा, so it's like not actually like a peak but a pass between two mountains. Like यहाँ से इस mountain से उस mountain Yeah. पे cross कर रहे हो It तुम. connects हाँ तो yeah Kullu Valley to the मतलब Spiti Valley. हाँ Okay. द जनरल लॉजिक ऑफ पासेस कि मतलब Yeah, हम yeah, एक yeah, वैली right. से दूसरी वैली में जा रहे थे Makes sense. हाँ पर और Nice. दूसरा मोमेंट था जब हम यहाँ से जस्ट उतर रहे थे Mm-hmm. ऑलरेडी हम काफी थक चुके थे बिकॉज ऑफ द असेंट Okay. क्या हुआ बीच में लाइक देयर वाज अनदर गाय इन द ग्रुप और मैं लाइक जस्ट both of us we just sat on a rock for like about 15-20 minutes did nothing but just soaked in the view of the Spiti Valley तो वो in general काफी काफी ज्यादा अच्छा था मतलब Vibe, not doing vibe. anything and just vibing yes Yes, तो nice. उसी मोमेंट पे जब ये लोग ये चीज एंजॉय कर रहे थे मैं डिसेंड अपना शुरू कर चुका था. Okay. तो हल्की सी बारिश हो रही थी एंड उससे पहले भी हुई थी सो द रॉक्स वर क्वाइट स्लिपरी Okay. और डिसेंट बहुत ही स्टीप था. तो मैं मतलब हर थोड़े थोड़े कदमों में जब गिर रहा था तब मैं गिरते गिरते वापस एक बार व्यू सोक इन कर रहा था. देख रहा हूँ ये दोनों वहां ऊपर मस्त बैठ के मजे कर रहे हैं. आई एम श्योर उन लोगों ने भी देखा होगा मुझे इतनी बार गिरते हुए ऊपर से. हाँ 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 एक बार तो तू पूछ भी रहा था हमसे क्या हम तेरा शूट कर रहे हैं क्या क्योंकि मैं कैमरा निकाल के ऊपर से एक आधा शॉट्स ले रहा था But I guess like गिरना is better than not करना. So हाँ first agreed trek anyways Yeah. like गिरते Oh, गिरते खत्म तो fresh खत्म. burns. Those are rare. So if you don't मतलब understand the reference, go check out a Dayara Bugyal trek video. Akshay was with us in the beginning, but then he was out of the video for the next last 3 days. So you will understand why it meant a lot more. a bit more context उसने अपना पहला हिमालयन ट्रैक पूरा करा है तीसरी attempt में Attempt. Attempt में over 27 years ये भी बोल रहे. Yeah. Thanks for पर reminding. फाइनली नहीं अब हो गया हाँ हो गया. Okay, so I think quick word about this trek. Like I can see the Tripsa banner. So how was the experience with those guys? Like obviously they are our sponsors. We are not trying to product place them. Shout out to them for organizing and arranging the entire trek for us. But just a quick like idea about how they were as organizers. Amazing. I would say it didn't feel like we were going formally with an organization. It just felt like we were just going with a group of friends who we have known for quite some time. क्योंकि एक भी बार इतने serious places पे भी there was no strictness, there was no treating you like school children. जैसे usually हमने सुना है treks पे होता है कि it's Right. very different and एकदम time to time. But यहाँ पे punctuality थी, but it wasn't forced upon you. Yeah. They were just treating you like adults. And one more thing that like deserves a huge shout out is that कि
इतने ऑल्टीट्यूड पे जाके इतने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी मतलब कितनी भी तेज बारिश आ रही हो, कितना भी खराब वेदर हो, हमें टाइम से हमारी चाय मिली है, हमें टाइम से हमारे स्नैक्स मिले, एंड एवरी डे इतनी वैरायटी वाला खाना मिला है फॉर एवरी मील दैट इट्स वेरी टेस्टी, एंड द वैरायटी दैट यू जस्ट कैन नॉट कुछ बिलीव कि छोड़, हम तुम्हें इतना इतनी ऊपर हाइट पे जाके भी ये सब पॉपकॉर्न मिल खा रहा रहे है. थे. Wow, हाँ, spoiled brats. yeah, totally. They were spoiling us, and we were enjoying it totally. So that's the beauty ना, क्योंकि क्या होता है कि there are generally two extremes. Either an organization, if they're relatively new, they're not as prepared, और फिर उनके साथ उतना मजा नहीं आता because they're still figuring things out, and that's all right. पर as a customer उतना मजा नहीं आता. पर दूसरे एंड पर होता है when everything is figured out and they want XYZ to be done in ABC manner, and that doesn't help. Because at the end of the day, you're there to enjoy. So this organization, I think they've struck a perfect balance already, even though they've been working for 4 years or so. But they're Great. already they have the perfect balance jahan par they are giving you the freedom to do everything, and yet everyone is responsible enough to be on time for everything. So Nice, काफी ज़्यादा nice. मजा आया. So shout out to Just Tripsa, a little guys. connection, हाँ, yeah. sure. Just a little correction. 6 years. Their first trek was also Hampta in 2016, and he also got this chance Cheers, to do the Awesome. same well, trek with exactly. them. So So shout out to Being Tripsa for part of- sponsoring this trip, and they still have batches until end of September for Hampta Pass itself. So if you want to consider, better book them right now. And they do other treks all around the year. Like you can keep checking their websites. So it's Trip Sard with double A at the end. So Google them and you'll it's find. like, yeah, they are based out of Jodhpur, so it's like Ram Ram Sa, like Trip Sa. That's the very catchy, I must say. Okay, now before we move on to the next section, we have a lot of people in the chat which I want to say hi to. So first and foremost, oh, Saranshi khud excited लिख के बैठा है. Parth told us that we started late. We are sorry, Parth. It's our first live. Please excuse us for 1 minute for this one time. For Akshay is replying AST. Acha. AST stands for Aditya Standard Time. Aditya is one of our dear friends and big supporters, but he's always late. So, yeah, no, we were not that late. We were just late by 1 minute. Ronak Jain is saying hi. Ronak Jain is our junior from college who is also a YouTuber. He does food YouTube, like food. He's a food blogger, and he has done a really beautiful series like. He takes you on tours of different local cuisines. So go check out his channel, Ronak Jain. Nishit Jogi, Kem Cho Ismail Bhai, I love your videos. Thank you, Nishit Bhai. Thank you for joining us. Vivek Upadhyay is saying hi. JTLYK, my brother-in-law planned a trip to Chakrata and asked me to join. Had no idea about the place, not heard about it. However, one search about the place, your blog came and I loved it. Hi Vivek, thank you so much. This means so much. Like आपसे connect करना, like पहली बार हमने किसी random like ऐसे live बात हो रही है हमारी किसी audience member ke saath who actually said like who came to our vlogs and liked our video. So thank you Vivek, means a lot. I will be going to on 10th September. Thank you again and keep making. Thank you. I hope you have a wonderful trip. अगर आपको उस जगह से कोई भी updates देने हो, like to हमारी कोई information में update आए हो, तो you can just drop us a message on Instagram, instagram.com/exploretheearth, same username, and we'll update it on the like video के description section में. or to help drop a us. comment on the YouTube video itself. हाँ, That works. YouTube video में आप comment कर सकते हो and we'll drop a pin there as well. So we'll take one more chat session later on. तब तक आपको like if you have any other chats, you can pump them over here, and we'll move on with our the live session ahead. So now next section we have, let me just confirm what we have. Yeah, I want to give some quick updates actually before we move on, so that you all are up to date with what we are going to do next. So let me share my screen. Yeah. Right. So this is the update section which we want to give. 3 updates we have. One is the Osmo update that which I want to tell you all. So we had an Osmo action camera equivalent to GoPro जो आप कह सकते हो. ये हमने 2020 में खरीदा, तो 2.5 साल पहले. 2.5 साल हमने अच्छे से यूज़ किया. दयारा बुगेल ट्रैक पे प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ा चार्जिंग पॉइंट में मॉइस्चर लग गया, तो
तो वी थॉट इसको ऐसे नहीं रखते, रिपेयर कर लेते ताकि अच्छी कंडीशन में रहेगा। अच्छी कंडीशन करने के लिए हमने DJI को कांटेक्ट किया। DJI वालों ने उसके ऑफिशियल रिटेलर रिपेयर और सर्विस सेंटर का एड्रेस दिया जयपुर में, हमने वहाँ भेजा। उन लोगों ने बोला 3 से 5 दिन में हम रिपेयर करके कोड दे देंगे। 3 महीने बाद उन लोगों ने, आफ्टर लाइक 20 फीडबैक्स, 3 महीने बाद लेजिट दे जस्ट टोल्ड अस कि आपका ऑस्मो बहुत टाइम ले रहा है, तो अब हम भेज सकते हैं पर रिपेयर नहीं कर सकते, रिपेयर करने का 8,000 खर्चा है। हमने बोला 8,000 नहीं चाहिए, वापस भेज दीजिए। वो बोला सर करवा लीजिए। ऐसा बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने एंड में वापस भेजा। वापस भेजने से एक दिन पहले कॉल आया कि सर आपका ऑस्मो बंद पड़ गया है, चालू नहीं हो रहा। मैंने बोला भाई सब चालू कंडीशन में था, तूने रिपेयर कर लिया, कॉस्ट बताया, और अब जाके लास्ट में बोला। वो बोला नहीं सर बंद हो गया। मैं बोला अब तेरी गलती है, तुम लोग ठीक करो। लड़ झगड़ने के बाद ठीक करके उन लोगों ने वापस भेजा। आफ्टर 3.5 months वी गॉट इट, इट वॉज वर्किंग फाइन। वी गो टू चिकमंगलुर ट्रिप। चिकमंगलुर में लाइक हमने हाइपर लैब्स लिए, ये सब किया, बाहर सब सही से चल रहा था। वी गो टू हेब्बे फॉल्स, बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल। पानी में हम लेके जा रहे हैं जस्ट टू टेक सम शॉट्स। विद इन 1 minute ऑस्मो बाहर तो लाइक पानी था, पर ऑस्मो के अंदर से पानी बाहर आ रहा है। It was supposed to be waterproof for up to 30 meters, and in just 3 feet of water, it was completely waterlogged. So completely damaged. हमने वापस आया, DJI को लिखा कि आपके सर्विस वालों ने ऐसा कंडीशन में दिया, and they are like, all you can do now is buy a new GoPro or a new like action, not GoPro, DJI Osmo Action. So पूरे पैसे बर्बाद हमारे, and they have like raised off, like हाथ उठा लिए, like we can't do anything anymore. This is your responsibility and we can't cover you under guarantee, and you can either buy a new device or you can just let it go. So we are left with only 2 options. So now we are without an action camera, and we are looking to buy one, but we are also looking to buy a DSLR camera, like a mirrorless camera. So our budget is very stretched. So in case if any one of you would like to help, if you enjoy our content, here is a shameless plug for all of you. We have 3 things where you can help us out. One, we have a buy me a coffee link. So buy me a coffee is where you can contribute a nominal amount to fund our expeditions. Second and third features are on YouTube itself. Second one is called super thanks, which is on YouTube. So अगर आप अभी comments या section में जाएंगे तो you can find super thanks and super chat features where you can like share any updates and you can contribute a nominal amount, which again goes back to us. And last thing that you can do is share our videos, help us spread the word of our content so other people can help us out and enjoy our content. So that's it. Sorry, this was a big rant. I am seeing already that sad boycott Osmo in chat from Hitarth. Yeah, boycott Osmo unless they are our next sponsor. फिर चलेगा। अगर वो नया एक्शन कैमरा फ्री में भेज रहे तो फिर नो, वरना boycott Osmo. Okay, so that was one update. Next ऐसा मत बोल। हाँ, ऑस्मो भी DJI, मतलब ड्रोन भी बिगड़ा तो वो रिपेयर नहीं होगा अभी। oh shit. No boycott. सिर्फ repair Osmo. Okay, so let me just give him some rest, और मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट क्या है। तो bookings and inquiry page. Now if you log on to exploretheearth.com/inquiries-bookings, तो आपको एक फॉर्म दिखेगा। तो होता क्या है कि यूजुअली आप में से बहुत लोग हमें पूछते रहते हो कि हाउ डू वी प्लान दिस ट्रिप, हम इसका आइटनरी कैसे बनाए, वी ओनली हैव 2 days, यही हमारा बजट है। तो नाउ वी आर एक्टिवली हेल्पिंग यू आउट। आप बस उस फॉर्म को भर दीजिए, and we will not only help you out with the customized itinerary, we can also help you with the bookings. While we are not an agency in ourselves, but we partnered up with some reliable agencies who can definitely manage your flights and all the land packages. So do hit us up if you need anything. Yeah. Anything that you would like to add, Ismail, here? I've just pasted the link in the chat section, so you can like save it or you can visit it after this video is over, and I'll also drop it in the description after the video is published on YouTube. That's it. Yep. So the next thing, the next trip update. And by the way, before I even begin, feel free to DM us, and you could join us for these trips already. Now, the next trip is, the first one is in October.
I am going to Annapurna Base Camp trek from 1st to 9th October. Like not the Annapurna Peak itself, but just the base camp trek. I'm going along with a few of my friends to make content as well as enjoy. Feel free to come join us on that trek. It is going to be 7 days of trekking, and then 2 days are buffer, like first and the 9th one. So again, we'll drop the link in the comment for Annapurna Base Camp, and you can check the organization that we're going with, as well as you can hit us up if you are interested. How is the difficulty wise वगैरह, like कौन कर सकता है, सब कर सकते हैं या special कुछ चाहिए? So difficulty wise, this is supposed to be a moderate trek. So as long as let's say if you've done a trek in the past, or at the very least are doing some form of exercise on a daily basis, it should be all right. What that particular organization says is the requirement is that you should have done the previous level difficulty of treks, but of what I've seen from the vlogs and of what I have researched, a decent level of fitness is all right to join us on this trek. But there should be some form of daily exercise. बढ़िया. And about anything about Annapurna you want to add? No. Okay. तो उसके सिवाय तू बता कि तू क्या कर रहा था? So guys, I have one more exciting announcement which I have been looking forward to a long time. The next trip I'm going to take, it's going to be a solo adventure for me, and I'm going on 11th September, which is in like next 10 days. So I'm going south to Mulki, which is near Mangalore, and I'm going for a surfing school. So I'm going as a volunteer, so I'm going to help them out with their surfing lessons and their like activities and content and everything while staying there, while they teach surfing to all the guests. So it's called Mantra Surf Club, and I'm going there for 1 full month. So in case आप किसी को भी surfing करने का शौक है or you want to try it out, it's best for beginners and intermediate surfers. The waves are perfect, everything is perfect over there. So whoever wants to join me, feel free to like accompany while I am volunteering there, and we'll have a nice time surfing. So from 11th September to 15th October. That's a major trip. So in September and October, we have 2 major trips. Like one is going surfing and one is going to Nepal and doing the Annapurna base camp, which is pretty wild. So 2 huge trips and 2 amazing content pieces coming up. That's all the updates as of right now. Kshitij, I think interest kar raha hai. What just happened? Whoa. Okay, let me just show the chat once. I'll stop streaming and go to the chat. Okay, so पहले तो boycott Osmo हो रहा था काफी, but Kshitij surfing करने आ रहा है, and Parth has started our super chat right now. Love the new videos and excited to see all the content from new trips. Repair Osmo hashtag. Thank you, Parth. This is going to bring us better content for you for sure. Thank you for so much. So this was our first super chat, guys. Thank you. Means a lot. Pretty good experience for us. Thank you, Parth. Back to our... Oh, sorry. I did not mean to take a break. I will go back to the PPT. Yeah. What we were discussing. Whoa. Have I closed the stream? No. It's all right. So. Yep. Back to this. Coming to trivia time. Are you both able to see the screen, Akshay and Saransh? Oh, yes. So this is a segment, guys, where I, as a host, am going to play with both of my guests some quick travel trivia questions, and just to entertain you all and also have a nice time while we are on this chat. Now, make sure that if you know the answers to these, don't reveal them before they answer, because then they'll just get a clue. So I don't want them to get any hints whatsoever, and they're obviously not allowed to Google. Now we have a few questions for you also, so whenever you have the answer, I'll ask you, and whoever can answer from the chat, otherwise they'll just answer. So we have 2 games. I'm going to play one right now and one later, so stay till the end. Now I'll directly go to the first question. Okay, now basic rules, 10 questions here. The one who gets the most right answer wins out of you 2. Okay, so you just have... What? Sorry? Wins what? My appreciation.
for joining me. Okay. The validation I've been yearning for. Okay, so now we have ये सारांश को पूछ, पहले उससे स्टार्ट करते हैं। सारे ऐसे ही है, चिंता मत करो तुम लोग। Let's go, Hital. Yeah. Okay, so this question goes to, actually, yeah, you both can answer, whoever knows. You just need to guess more than the other. Like if you just answer 2 and Saransh can answer 3, then Saransh wins. So anyone, 0-1 से जीतने वाले मैं बता रहा हूँ। any guesses? कुछ हिंट विंट देगा? हाँ दूंगा पहला, अगर पता ही हो तो। स्पेन। मतलब Hints. कितने, मतलब हम अटेम्प्ट्स कितने कर सकते हैं? कोई भी, just like you just need to answer unless ओके, स्पेन है क्या ये? जायर। जायर नहीं है, बट गुड गेस। ये कंट्री है, ये कंट्री की आउटलाइन का मैप है, उसको गेस करना है सारांश, लाइक व्हाट कंट्री दिस कुड बी। स्पेन बोला मैंने, वो है या नहीं ये बोला। ओह सॉरी, मुझे सिर्फ सुनाई दिया कि ये क्या है। Okay, no, Spain नहीं है। I'll give you a hint so we can pin it down a little better. Okay. It's in Africa, the continent of Africa, and Sudan. it's नहीं, and one more hint just to accompany. It's a pretty popular team, like cricket team. साउथ अफ्रीका। South Africa नहीं। जिम्बाब्वे। Yeah, Zimbabwe. Oh, I have a friend from Zimbabwe, Maxwell. So Akshay has guessed 1. Akshay 1, Saransh nil. Next question. Guess this country. भाई सारे ऐसे ही है। हाँ सारे ऐसे ही। कोई भी आने वाला। Hints दूंगा, चलो ना बताओ। जर्मनी। What if I tell you मैं भूल गया आंसर? ओए क्या नमूना है। चैट में देख, किसी ने बताया? चैट में गाइस एनी आंसर? आंसर दिखा रहा है, मैं तेरी स्क्रीन देख सकता हूँ, सारे एक साथ तो नहीं लिखे हैं। चलो तो फिर गेस करते रहो, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। एतात गेस कर रहा है। ओमान नहीं है, नो। अच्छा, ओ आई थिंक इट्स कोलंबिया। अरे यार, ये गाइस कैंसिल होगा। अक्षय ने मेरा कमेंट पढ़। I need to find a better system to hide the answers. Okay, yeah, that was Colombia, but no points for Akshay. Okay, this country I know, so I don't need to check the answer. Even I know this one. सारांश तेरे को ट्राई करना है पहले? क्या तेरे को पता है ये वाला? हाँ। Anyone from the comment? Anyone from chat? Any answers? I guess it's Croatia. Wow, yeah, it is Croatia. कैसे बता? अरे मेरे को जाना था, इसलिए मैं उसका मैप ऐसे ही देख रहा था, and I remember कि it had surrounded one of like it's हरगोजोविया को, मतलब वो कोस्ट लाइन ही नहीं दे रहा है, पूरा घूम के उसको कवर करके रखा है। या यहाँ पे हरगोजोविया आता है, तो पूरा वो बॉस्निया जिसको बोलते थे। राइट, मैंने तो मीम में देखा था कि क्रोएशिया, बोस्निया इज लाइक गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ कोस्ट लाइन, क्रोएशिया इज लाइक नो। आई थिंक मैंने ये मीम भी देखा। सही है, चलो 2 for Akshay, nil Saransh right now. This country. ये तो मध्य प्रदेश जैसा ज्यादा लग रहा है कंट्री से। नहीं, वैसे फिर यूपी है। कंट्री है गाइस, अभी नहीं दे दिया स्टेटस एमपी को। ओके, एशिया में? हाँ एशिया में, चलो। एंड लैंड मास इज प्रीटी लाइक बिग, इट्स नॉट सो स्मॉल, लाइक भूटान जैसा नहीं है, तो भूटान नहीं है बेसिकली। कौन सा है? कजाकिस्तान? नहीं। चाइना है ये? नो, रॉन्ग गेसेस। चाइना नहीं है, पर क्लोज। रशिया भाई, एटलस दिखाओ कोई बंदे को। अबे रशिया के लिए तो ये पीपीटी छोड़ी पड़ जाती। Saransh, any guesses? It's closer to China. It's bordering China. चलो। में कहीं और? It's bordering China. Taiwan? Bordering China. Mongolia? Yes, Mongolia. Saransh 1, Akshay 2. 1. एक। हाँ चलो जल्दी, फास्ट रैपिड फायर। टर्की? पार्थ टर्की तो नहीं है, सॉरी, बट नाइस ट्राई। नहीं, यूरोप नहीं है। साउथ अमेरिका में? साउथ अमेरिका में, यस। यूरुग्वे? नहीं। पेरू? पैराग्वे?
Peru. Yeah, Saransh 2, Akshay 2. Parth guessed it right, Mongolia, but little late, I guess. हमने जब पढ़ा पार्थ तब थोड़ा हम आगे चल गए थे. Sorry, lag delay. Hashtag. Okay, last. Sorry, not last. This is. ये देखा हुआ है यार. हाँ, वही मैं बोलने वाला था. Westeros. Hashtag GOT. पार्थ सारे गेस कर रहा है सही आंसर्स भाई. आई थिंक वो गूगल कर रहा है या इमेज सर्च कर रहा है. स्नीकी पार्थ. यस, ये तो यूरोप में ना, ये वाला था. और मे बी पार्थ इज द रियल. ये यूरोप में है. जल्दी बिफोर पार्थ आंसर्स आई वांट यू टू आंसर. इटली नहीं है अक्षय, कम ऑन. स्पेन. चैट में पार्थ ने आंसर कर दिया है ऑलरेडी गाइस. फ्रांस. अरे देख, मैं तेरे को हिंट दे रहा हूं. अरे यार अक्षय देख लिया चैट. पार्थ 1. सॉरी गाइस, नो पॉइंट्स फॉर यू. चल कोई ना. पार्थ ये तो बता, मैं द नहीं विनर देखा. ऑफ दिस राउंड. पार्थ 1. ये जर्मनी है. अक्षय इतना कर हिंट लिया. भी तो दिया. जर्मनी में बोल तो चुका. सॉरी, मैं पार्थ पे फोकस था ज्यादा. डिस्ट्रैक्शन. Okay, this one. This goes for the chat. Anyone from the chat before these guys can answer. गो हितार्थ, बता. Hitarth, Parth, Vivek, any one of you, any answers? ये हिंट देता हूं मैं. ये मिडल ईस्ट में है एक कंट्री. हाँ मुझे पता है. कैसे बोला? देखा है मैप भाई, थोड़ा बहुत मैं भी खोलता हूँ एटलीस्ट गूगल मैप्स. क्या क्या आंसर दिया, मेरे को सुनाई नहीं दिया. नहीं, किसी ने आंसर नहीं दिया. उसने बस बोला कि ये मुझे पता है. ठीक है, नो आंसर्स फ्रॉम द चैट येट. मे बी मैं थोड़ा लैग में चल रहा हूँ. सो एनी वन ऑफ यू वांट टू गेस? चल सारा. नहीं होगा. अरे हितार्थ कह रहा है व्हाट एवर पाथ सेज. सही स्ट्रेटेजी. अरे बोल देता हूँ, कोई ना कोई तो होगा. जल्दी 5 seconds. चल. नो पार्थ. हाँ, पार्थ ने गेस कर लिया. सॉरी, ओमान नहीं था, जॉर्डन है ये. चलो लास्ट 2 है. दिस इज. भी तूने बोला उसके लिए लास्ट है. हाँ मैं भूल ये गया था. मेडिटेरेनियन सी में है ना ये? नहीं. अच्छा. ये देखो हिंट बड़ी है इसमें. लाइक बीचों बीच कंट्री के अंदर एक बीच में रीजन है जो दूसरा कंट्री है. इफ यू आर अपडेटेड विथ जियोपॉलिटिक्स. अगर बाकी पूरा प्रॉपर मैप होता तो ऐसा लग रहा है वो अंदर वाला ऑस्ट्रेलिया होगा कोने में नीचे. जल्दी. ये भी हाँ, कुछ भी. ये तो साउथ अफ्रीका है. पार्थ इज द क्लियर विनर ऑफ दिस. पार्थ भाई सारा आंसर दे रहा है अपने चैट में. नाउ वी नो अगली स्ट्रीम पर किसे होस्ट करना चाहिए. Path has won a spot. Okay, last question. Fastest finger. भाई मतलब तू क्या समझता है हमें? मतलब ऐसे आउटलाइन दिखा दे. मतलब कितने 200 देश थोड़ी याद होंगे. वो नहीं आते टॉक शोज में चाइल्ड प्रोडिजीज जो 2-2 3-3 साल के बच्चे तेरे को सब कुछ बता देंगे. इधर कह रहा है पैसा वापस कर दो पार्थ का भाई. सही बात. Before this goes anywhere else, I want to close this game. इसका आंसर था इराक. But no point before Parth even steals this. तो ठीक है, हाईएस्ट पार्थ है, सेकंड में हूँ, फिर सारांश. ठीक है, एक ही विनर. तूने भी तो 2 ही दिए. विनर एक ही होता है. तूने कितने दिए अक्षय? 2 या 3? 3 भाई. और 2 मैंने वॉलंटरीली चैट को देने दिए. वो तो मैं गिन भी नहीं रहा. चलो मूविंग ऑन टू आवर इंस्टाग्राम Q&A. दिस इज फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड अभी पार्थ कोलंबिया अभी खत्म हो गया भाई. कोलंबिया सेकंड वाला था. चलो चैट, वी आर मूविंग ऑन. You if you have any question and answers for us now, you can ask us. Otherwise I'm going to take a few questions and just randomly answer whatever comes. तो ये हमने इंस्टाग्राम पे पूछे थे. इफ यू डोंट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इट्स इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर द अर्थ, स्टार्ट्स विद एन एक्स, सेम यूजर नेम. डू फॉलो. हम काफ़ी अच्छी रील्स बनाते हैं. कुछ बहुत पॉपुलर हुई थी पर बाकी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो हेल्प अस आउट देयर. नाउ क्वेश्चंस दैट वी गॉट वाज, do you spend your own money for travel? Have you started earning yet through this? This was from Nidhi Kotak. I am sure this is one of the popular questions, so I'm going to answer. Yes, we have
we used to spend our own money for travel, but since last 8 months or so, we have not been spending anything, and we have not been making major profits, but we have started accumulating a little bit as incomes from different streams. So we have started monetizing our YouTube videos through ads and super chat, like you just saw Parth jo humne bheja, buy me a coffee, from all these. And apart from that, we have a secondary stream of income for all three of us, which is our own private and individual streams. So I do a little bit of freelancing work. Akshay has set up his own online store of his family business, which he operates as a separate entity. Saransh is very active with stocks, options, trading, and all these things. So we have a second incomes, and we have our XTE income, which is combined for three of us. सारांश का मेन तो पता है वो क्या? फुटबॉल बेटिंग से कितना कमा लेता है? FPL कौन सा? I don't know कौन से पे betting होती है, पर Saransh will educate you on that on his separate stream. Saransh Agarwal, YouTube पे जाइए, and you can also try out. कर रहा हूँ एक YouTube चैनल उसके लिए भी स्टार्ट कर रहा हूँ. लिंक आ जाएगी guys जैसे ही लाइव होगी Xplore the Earth. So yeah, that was a quick answer. If you want more details, you can drop some questions in chat. We'll try to be specific, and we'll try to answer them. Next, Akshay, you want to take off? Why do you need to turn off all your electronic devices before an airplane takes off? And so guys, उसमें फोन पे ऑप्शन है फ्लाइट मोड. मतलब फिर क्यों पूछ रहे हो यार? मैंने भी नहीं पूछा कभी किसी को. पर कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे पढ़ा था कि उसका जो कुछ वेव्स होते हैं वो प्लेन के फंक्शनिंग से एरर कॉज कर सकते हैं इन द पायलट सिस्टम, इसलिए वो फ्लाइट मोड पे डलवाते हैं. आई डोंट नो कितना श्योर है, पर मुझे नहीं पता इसका आंसर. ठीक है, तो वी हैड आज की डेट में गिवन द टेक्नोलॉजी ये मानना तो मतलब डिफिकल्ट होगा कि मतलब द सिग्नल्स आर गुड इनफ टू एक्चुअली डिस्टर्ब देयर फंक्शनिंग. बट इन जनरल आज तक मैंने भी सिर्फ वही सुना और पढ़ा है. मतलब स्क्रीन पर आने से पहले मैंने ऐसे गूगल सर्च करी, टॉप 2-3 रिजल्ट्स में सेम ही चीज है, कुछ और नहीं है. पार्थ के पास आंसर होगा. रुको, पार्थ बता दो एक बार. Okay, just kidding guys, like we had actually asked people to ask us like good questions that we can take on our live stream, and this is what we got. But I think we have next question that Saransh can answer. What is the one thing that you carry in you from places people? काफी अच्छा क्वेश्चन है. Just reading this, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज आ रही है like in terms of what I carry, I think vibe in the sense कि जब हम लद्दाख गए थे, almost everywhere लोग हमें झूले के साथ greet कर रहे थे, and both the phrase itself and the smile on their faces, I think that's something that we have carried on with ourselves, like figuratively as well as literally, क्योंकि कितनी बार हम लोग मजाक में एक दूसरे को झूले कह के भी greet कर देते हैं. मुझे तो वो गाना भी याद है, झूले, ऐसा कोई गाना था लद्दाखी, सब झूले झूले कर रहे थे. तो मतलब I suppose सबसे बड़ी चीज that I take from people would be in general the people of that place actually, like how were they, and to be told अभी तक हम जितनी जगह भी गए हैं almost हर जगह ही we found people that were always friendly. मतलब ऐसा बहुत कम ही हुआ that they were giving us cold shoulders. So I think in that regard हर जगह से good vibes would be the answer. Nice. Now Burhan, who is our school friend and also a good friend, like he is asking us, does free will exist or is everything predestined? अलग tangent पे. Burhan, I hope you are watching this. अंकुर वारिको का चैनल नहीं है, क्या कर रहे हो तुम लोग? Oh God, sorry guys, we have no answers, but I'm sure Parth will have some. So over to you, Parth. पार्थ ने पायलट वाली वो चीज बताई है वैसे. हाँ भाई, पायलट को रेडियो सुनने में इंटरफियरेंस आती है. कौन सा रेडियो मिर्ची? हे भगवान. Sorry, we are not that good with our humor. सब लिखा हुआ है. Hitar says, भाई, everything is written. Good. As you believe, Sadhguru.
चल अगला भी। ठीक है, yes, next. Who's taking? Your dream trip. I think all of us should take this one. बताओ दो, one What's sentence, yours? okay? लंबा नहीं करना. Yeah. Europe. ओके, मेरी तो अभी ऑन बकेट लिस्ट लाइक सर्फिंग थी, पर अब मैं जा रहा हूँ तो वो ड्रीम से रियलिटी हो गई है. तो नेक्स्ट ड्रीम ट्रिप Ooh. इज ज़ांस्कार बाइक Show पैक. off. नेक्स्ट ड्रीम ट्रिप फॉर मी इज ज़ांस्कार बाइक पैकिंग. सो होपफुली अगले जुलाई आई एम प्लानिंग कि ज़ांस्कार में साइकिल लेके पहुंच जाऊंगा. योर्स? डन डन। आई थिंक मेरे लिए आइसलैंड होगी. Just the landscape, it has captured my imagination. Least of which, मतलब not the least of which would be the Northern Lights. So definitely. सही है, बड़े अरमान. हाँ मतलब ज़ांस्कार तो कर सकते हैं ना. नहीं, वर्ल्ड कप भी आ रहा है ना, बैटिंग थोड़ा हो जाएगा, बजट भी. तभी. यस अक्षय, ओवर टू यू. Yeah, so मैंने तो बोला यूरोप. बहुत ही वेग आंसर आई नो, बट मुझे वहाँ के जो हिस्टोरिकल पार्ट है पूरा, रोम, फ्रांस, तो ये सारी प्लेसेस मुझे आराम से 1-2 महीना उधर रह के देखनी है, हर एक मॉन्यूमेंट वगैरह. और ऑफ कोर्स यूरोपियन क्यूजिन सारे ही, इटालियन स्पेशली, वो सब मुझे एकदम ही स्लो ट्रैवल करके एक्सप्लोर Fancy. करना है. इट्स माय ड्रीम. फैंसी एकदम. बढ़िया. ओके, चैट में हमें पार्थ बोल रहा है बाली में अकेले ही चला जाता हूँ तो फिर. कितनी बार हाँ, जाएगा मैं बाली? खुद 2 बार जाके आया है. हमारी ड्रीम ट्रिप थी पर अभी थोड़ा करेंगे बाली श्योरली. सून पार्थ सून. हैशटैग ऑस्मो रिपेयर हो जाए उसके बाद. तो मूविंग ऑन विद द लाइव सेगमेंट, वी हैव वापस ट्रिविया करना है. भाई मैप मत दिखाना, कुछ और कर. So we have one more trivia game. This one is not that difficult, I guess. It's going to be a little easy, and it's also a little more fun, I think. पार्थ, वो देखने के बाद पता चलेगा. मेरे को नहीं पता इस बार क्या करवाने वाला. पार्थ ध्यान से थोड़ा let's जीतने देना इस बार. move ahead. Now, this time rules are a little different. I have 5 questions for Akshay, 5 questions for Saransh. So, out of the 5, how many you can answer, you will win based on that. ठीक है? So, first 5 are for Akshay, next 5 are for Saransh. Over to you, Akshay. Capital of Kazakhstan. I don't know. ठीक है. Next. 3 countries that start with F. France, फिनलैंड और फिजी या फुजी. अच्छा, गूगल कर लिया था ये कल हमने, ये रिहर्सल में किया. अबे नहीं, मैं गूगल नहीं किया था मैंने. पूरे वर्ल्ड में सिर्फ पहले भी आंसर दिया था. पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंट्रीज है जो एफ से स्टार्ट होते हैं, और तो तीनों मालूम थे. हाँ, 2 तो मालूम. तूने तो बोला इजी है, कर लिया उसने. स्कैम भाई अक्षय. यार, सो 3 कंट्रीज. इसका तो पॉइंट मिलेगा. मैं उस दिन तीनों बोला था. चल ठीक है, चलो. फिजी, फ्रांस एंड आपको पता होगा, ये उसको पूछना. चल ठीक है, अभी के लिए मैं रखता हूँ. इसका वैसे आंसर मैं देना भूल गया. कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, इट्स नूर सुल्तान. फॉर एनी वन ऑफ यू जो और भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो नाम भी नहीं सुना था. अलमाटी तो सुना होगा सबने, विच इज वेरी पॉपुलर. तो मैंने सोचा सब अलमाटी आंसर देंगे, विच इज द लाइक वन ऑफ द पॉपुलर सिटीज ऑफ कजाकिस्तान. पर या, इट्स नूर सुल्तान, नॉट कजाकिस्तान. अरे सॉरी, नॉट अलमाटी. Moving on to the next question for you, Akshay. So you have answered 1 right now. 3 countries that start with D. डेनमार्क, जिबूटी, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. तीनों ठीक है, right. 2 questions you got right. Capital of Australia. कैनबेरा. वाह ज्यादा YouTube शॉर्ट्स देख रहा हूं. 3 answers right. And in which country would you find this monument? ये तो देखा हुआ है. और मुझे ये भी पता है कि अगर इसका आंसर नहीं दिया तो बहुत बेइज्जती होने वाली है. बट मुझे नहीं पता है और मैं गेस ही करने वाला हूँ. चिचेन मुझे इट्जा. याद नहीं आ रहा है. Yes. हाँ, क्या? चिचेन इट्जा इस मॉन्यूमेंट का नाम. अरे ये मेरी वो नोटबुक में भी था इसका यार, मैंने पढ़ा भी था. क्लासमेट वाली.
बट मुझे याद नहीं आ रहा Did you know? Did you know? Okay, I don't know Okay, this one. this is in Mexico. It's called Chichen Itza. Yeah. It's Inca Mayan ruin, yeah, monument. Okay, next, first one for you. Capital of Colombia. My respect for Akshay has gone up, Hitar says. 3-4 आंसर कर लिए, या तो फिर मेक्सिको वाला आंसर मुझे नहीं आया सारांश के इसलिए। भी पता है। अबे नार्कोस नहीं देखेगा ये तो पता हाँ, है। मैं बोलने ही वाला था कि लाइक हिंट के लिए, इफ यू हैव अ नार्कोस, एस्कोबार याद है, वो तो उसका पर नाम। वो सिटी, इंसान हाँ था भाई, वो भाई। सिटी याद नहीं आ रही है, लेकिन मेरे को याद नहीं। ओके, आई गिव यू हिंट सारांश। हमारा फेयरवेल था ना जो कॉलेज का, हम इस सिटी के इस टेबल पे टेबल पे बैठे बैठे थे। हाँ, इसी, और मैंने यही बोला था कि लाइक ये तो हम अपना सिटी हुआ ये, बिकॉज नार्कोस तब ज्यादा पॉपुलर था हमारे फेयरवेल। नहीं याद आ रहा। मैं नाम बोलूंगा तो आ जाएगा। बी से शुरू होता है ना? हाँ, बी। ओ वेनेजुएला। बी बी बोला भाई। बी बी। ब ब बॉय। नहीं नहीं पता। वेज नहीं भेज। बॉ। हाँ नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। ठीक है, इट्स बोगोटा। अब याद आ गया होगा। वो तेरी आवाज इतना पूरी कट गई, और तूने एक क्या बोला? रिस्पेक्ट का डाल दे यार, 100 रुपए। बोगोटा, बोगोटा। ओ हाँ, यप। अब याद आया। ओके, Gringo. नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कंट्रीज दैट स्टार्ट विद जी। ये तो इजी है सारांश। बहुत जर्मनी, इजी है यार इसको। ग्रीनविच। ग्रीनविच सिटी है। ग्रीनविच कंट्री है। कंट्री है। चलेगा ना? नहीं चलेगा। जर्मनी, घाना, खाना, यस। जल्दी जल्दी। एनीवन इन चैट? मैं बोलूं? रुको यार, बेचारे को टाइम दो। मेरे को 2 आते हैं और। चल बता दो। जॉर्जिया, हाँ, हो गया 3 ग्रेट टोटल। ब्रिटेन, ग्रेट ग्रीनलैंड। अब बस बस बस, ठीक है, अब अगले चैट के लिए कुछ रख। ग्रीनलैंड कंट्री नहीं है वैसे। ग्रीस, यस। ग्रीस। वाओ शिटेज। मतलब जी से काफी थे, इसलिए मैंने एक इजी रखा था, हाँ, पर काफी है, सारांश भाई काफी है। यार अब जोन आउट हो गया थोड़ा। और एक भी है जी से लोकेशन, तेरे को नहीं मिलता वो। कौन सी? 3 countries that start with H. Moving on. सारांश, this ओ was, सारे तूने ऐसे रखे क्या? हंगरी हाँ, और कौन सा एच से? चल 2 बता दे, 2 भाई तेरे लिए काफी। याद आ अरे जाए। ऐसे क्यों? चल मैं बताऊं एक। रुको यार, प्रेशर मत दे कहने तो उसे। दे। हाँ, हंगरी हो गया फिर। ओके। सारांश को भाई गूगल मैप्स का वो थोड़ा हाँ, टाइम देना पड़ेगा सही- मुझे। सही लग रहा। चल अक्षय बता दे तू। इतने Honduras. मैप्स बोला तो तेरे को क्या याद है? हाँ, जो एक बार 6th स्टैंडर्ड में मेरे एसएसटी में, सोशल स्टडीज में 100 मार्क्स आ रहे थे, 98.5 है, 1.5 मार्क्स मैप में ही घटे थे। 98.5 और एक आंसर नहीं दे। मुझे तो Honduras लगा, को मुझे तो लगा करना था। 6 स्टैंडर्ड में तेरे एसएस के टीचर ने बुक रोल करके सर पे मारी थी, इसलिए कुछ याद नहीं आ रहा है। बढ़िया, चलो हाँ, बता बता अक्षय बता। बता दिए ना। तूने कौन सा बोला? हॉन्डुरस, हंगरी और हाँ मेरे को एक ही हॉन्डुरस से याद है। फिर एक सेकंड रुक जाना, अभी एफर्ट डालना ही है तो याद कर सकता हूँ। नहीं नहीं चलेगा, चलो कोई चैट में बता देगा। पार्थ अभी तू बता दे, तू बता दे। हॉलैंड, पर हॉलैंड कंट्री नहीं है, हॉलैंड। नेदरलैंड से आता है। यस, हाँ, वैसे हाँ, नहीं चलता है, देसी नाम भी चलता हाँ, पुराना नाम था, पर एक्चुअली हॉलैंड इज वन एरिया इन नेदरलैंड्स, नॉट इवन द फुल कंट्री, सो वैसे नहीं चलता है। पर मैंने लिखे थे, पर अभी याद नहीं आ रहा है, पर अब चलेगा अभी। कैपिटल ऑफ वियतनाम। अभी 2 आंसर्स बाकी। अबे यार, उसका भी नाम एच से शुरू होता है यस, कि नहीं? पता है? हाँ हाँ, हाँ। पर 2 सिटी है अबे जो, रुक, अबे, रुक। 2 सिटी है उसका जो, it rhymes with the white thread that we हाँ, Indians wear. फिर यू आर राइट अक्षय, you are Hanoi. right. हाँ, हनोई। हाँ, Like the other popular city of Vietnam is Ho Chi Minh, which is again more like Mumbai, Delhi type city. But हाँ, मतलब Hanoi is actually the capital, not Ho Chi Minh. इसलिए मैंने ये Hong थोड़ा, Kong, right?
trick Auntie question में जवाब रखा था. बचा लिया अक्षय, तूने बचा लिया. Okay, last question for you, Saransh. In which country would you find this monument? You have a landscape to take some reference. And ये कंट्री हमने पहले ट्रिविया में इसका आंसर था एक बड़ी Trivia हिंट. में मतलब अरे वो मैप वाली उसमें से एक कंट्री है ये. वो 10 क्वेश्चन जो पहले हुए हमारे उसमें. काश ध्यान दिया होता कि करेक्ट आंसर क्या है. एसएस टीचर को एक दे ही देना था मुझे लग रहा है. एनी गेसेस? चल जल्दी क्विकली. This is one of Continent तो बता. this is in Asia and this is one of the most popular conquerors of the world. ये जिसका स्टैच्यू है. फिर जो लोग मंगोलिया. बोलते हैं कि 1/3 of the population is from his dynasty. मंगोलिया से फिर. हाँ, मंगोलिया. सिकंदर. नहीं अलेक्जेंडर. नहीं, दिस इज चंगेज खान का स्टैच्यू है. Genghis Khan. And this is called the Genghis Khan या Genghis Khan equestrian statue which is erected in Mongolia very recently. Nice. So जब जाएंगे तब ब्लॉग बनेगा गाइस. तब तक आप सुपर चैट में डालते रहिए, हमारे फंड्स इकट्ठे हो जाएंगे. Okay, we have some more 5 more questions and again I'll just start quickly. Bhavna asked us, how can a girl travel to places that we recommend and are they safe? So Bhavna, so far whatever places that we have been to, none of them have been sketchy in terms of like they have not been dangerous or they have not been like very risky. Like in terms of adventure, risky yes, but it's very safe and whatever people that we have met so far, they have been very good to us. Just take the basic things in mind, like be responsible to the locals, avoid traveling at night or sleeping or camping alone at night. Even we don't do that. Even when we only camp when we are in groups of 3 or more. So just avoid any risky business that you would otherwise avoid even in any cities. But other than that, I don't think you should be like worrying about it. But obviously be precautious and carry, as a solo female traveler, you need to be a little more cautious. So carry the pepper spray and learn some basic self-defense techniques just to be more safe. Otherwise, I don't think you would be in a lot of risks. पर It सबसे would, बड़ी it would बात at least मतलब make you feel safer. Not Yeah. that you might actually use it always, but Exactly. need it always. But Yeah, exactly. it would give you that confidence as True, well. true. in general, like if I am traveling to a new place, मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज होगी वो होगी कि whichever place I'm visiting, I would know what I'm going to do there, where I'm going to be on the back of my hand. मतलब वो जरूरी है that you plan well. Yeah. कि मतलब at least if you know कि कहाँ कब रहने वाले हैं या फिर all of those things. Yeah. So that goes a long way in giving some sense of assurance. मतलब मेरे लिए I think that's the most important key, that you plan everything well in advance. मतलब इसका मतलब एक एग्जांपल होगा, जब हम मनाली से ले साइकिलिंग करने गए थे, न्यू कि हम कहाँ रहने वाले हैं थ्रू आउट द रूट फॉर दोस 10-12 days. But if that wouldn't have been this case, like I don't think we would have been as comfortable doing it, especially क्योंकि हमारे पास 6-7 दिन नेटवर्क भी नहीं था. तो हमारे घर वाले ऑलरेडी परेशान थे जब हम उन्होंने बोला था 5 दिन नेटवर्क नहीं होगा और 7 दिन नहीं रहा. मतलब things of this sort happen, but as long as you know कि like what's the plan for the entire trip, तो काफी helpful रहता है. True. Sparsh Sharma, who is also a wannabe vlogger and a dear friend who was with us in Chikmagalur. So if you just saw the stories, you would know him. The guy who was doing all the crazy stuff. He asked us, what if you get 10 good questions and 1 mediocre question? I'm not going to entertain this kind of question, so we are just going to move on. Right. Anyone would like to take the run from Murtaza, Singapore? How did Explore the Earth start? Is it still a passion, or you guys have built it as a proper business? So Explore the Earth started as an extension of Ismail's personal blog that he used to write in college. Yeah. Wherever we used to go, he used to just write the do's and don'ts of that place and what to take care of. But after college, we wanted to do something in this space, and what alone Ismail could contribute to this, or what the 3 of us could contribute, wouldn't be enough ever. So we thought, let's crowdsource this kind of information and present it in a way that it's helpful to more travelers across the world. And most importantly, let's keep it free. But yeah, that's how it started. But now we are into video making, and
We have made explainers that have helped lakhs of people so far. And I think the place where it is right now, we have been able to help more people and more travelers in a better way, that too. So it is still a passion to travel and to help others. I think Akshay, Oscar, yeah, video. yeah. So I think what he meant to say was like it's still a passion to travel and help others by providing true, first, and genuine information. That is the core of XT. Like just to give out the right travel information wherever we have been to, and it's not like a proper business. Like we are not a startup per se. We are more like influencers or like video creators or travel content creators, I think, and we are operating as creators. So yeah, we have a lot of other avenues as well. Like we will be getting into merchandising, we are into brand deals, collaborations, and as such, like we have a separate wing for bookings and inquiries now, but it's still not a startup. We are still operating as creators and influencers. So I think that answers the question. Yeah. Before I take the next question for you, Saransh, I just want to let the chat know कि अगर आपके पास कोई भी questions है, you want to ask us, drop them in the comments. हम इसी session में answer भी कर देंगे. So you have some time while we answer the next three. You can drop them in the chat. बाकी कुछ भी आपको बात करनी है, कुछ भी पूछना है, feel free to like interact with us in the chat. This is our time with you all, and we want to spend more time with interacting with you all. So yeah, over to you, Saransh. What is the aim of Xplore? Where do you guys see yourself in the future? What role exactly? भारी भरकम है थोड़ा. हाँ काफी 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 ज़्यादा. तो मतलब I think in general this question जो what it boils down to is what is Explore the Earth or future में what are the plans or how do we position ourselves at the core. तो I think it makes me wonder कि हमने क्या क्या कर लिया. Like we started as a outsourcing platform for information for all the travelers. Then we started organizing group trips. उसके बाद COVID happened and then we stopped with that, and now we are creating content across platforms. Uh, we are recording what we are experiencing, those are vlogs, and then are doling out travel explainers, travel guides for anyone who would want to travel themselves, have a decent base of information to launch their trip from. So between all of that, we never thought that we'll be doing this, what we are doing right now, anyway to begin with. Like underlying for all of us was just to do something with travel, because all of us did love that from almost always, going to new places, figuring out things. But as for now that we are doing this and we would want to structure this, I think how do we see ourselves is, as Ismail said, we are content creators at the core. Now we are creators for the travel line, wherein we are trying. Sorry guys, I think my earphones just died down and you are getting feedback. I'll just mute myself. Primarily, we just do not want to show you, like, sure, we want to inspire you to travel, we want to show you places, but more so what we want to do is we want to be able to give you accurate information for any given place. So if you were to ask me what will be our best achievement, as this question says, I think it would be once we have travel guides for all the places in India to begin with. That would be, let's say, a good milestone for me to say, for us to say that we as a channel, we have been able to build a community of people wherein everyone is able to travel on their own using the information that we over time have generated. So for me, that would be our best achievement. And in general, I'd position ourselves as content creators, laying out information for everything, not just travel guides, but let's say in our previous live, I think on Insta, people even were asking about camping related things and all of those things as well. So not just travel guides, but any sort of guide that could help you travel in any which way that you want. So that would be yeah, I think aim to be like able. Even like so sorry, just cutting you off, but like even we have not so far like
created a 5-year plan or a 10-year plan, because this industry is so evolving fast. Like creator economy is something that is new, like no one previously has done it. So we are also finding opportunities and experimenting and seeing the results and growing forward over time. Like that's why we have done so many things already. But I think at the core of it, what we started with in the first place was always like to provide helpful information which is very first hand, personal, and which is genuinely valuable to someone who is into travel. And that is still the core of XTE. Like we create explainers which are travel guides about places, we create like content around trekking, hiking gears, but it's always like adding value to other travelers. So I think that's the core, and that's what we are growing to grow around over time as well, as we keep experimenting with this. And yeah, I think if you want to add anything else, or you can take the last question as well, Saraj. No, I'm good with this one. The last one, Rohan Agarwal asks, is the go-karting active at GIP? So GIP is like the Great India Place, is a mall here in Noida. I have no clue if it is active or not. I haven't been there in a long while. I don't think anyone does now. Like this happens, right, with malls. A new mall comes up and the previous one nobody even cares about. So that's what has happened with this one too. Rohan was just messing with us and just trying to engage and interact with us. So I think that's the end of the 10 questions that we got from all the places. And that's also the last of the updates or like the agendas for this live session. And as of right now, we don't have a lot more questions in chat, so feel free to DM us or later or drop them in the comments below, and we'll try to answer them in the next live session, which hopefully will be very soon with more games, more guests, and more of like engaging with you all. So this has been a very fun session. Yeah, please, anyone wants to add a last few words? मैं तो बकवास कर रहा था. मैं तो कह रहा था definitely not me with the map flip. नहीं प्रिपेयर करके आएगा ना. प्रिपेयर करके आएंगे. I doubt. मैं कुछ नई गेम लेके आऊंगा. मेरे को तो मजा आया. Yeah. ठीक है guys. So game तो जीत गया. Feel free to like drop any more ideas that you want us to do in the live sessions, then we can also try them out. What more content that you would like to see from XT, you can like anytime approach us on Instagram or YouTube or however you are feeling confident. So just reminder that now we have a bookings and inquiries page that you can like address all your needs for, like from flight tickets, hotels, complete customized itineraries, and we can help you provide the best quote out from the market for any of the places in India or outside the world. Second is like you can help us fund more such videos by helping us like through the buy me a coffee link, super thanks, super comments in our videos. Or we are soon going to launch a merch store for our prints and photographs that you can check out. Hopefully the links will be updated in a week or so in our description, so check them out and you can help buy some merch, and that helps us grow as XTE. And lastly, if you don't follow us or have not subscribed, now is the time. Share our content and help grow us more. See you in the next coming videos. Hopefully we'll be doing more live, so stay tuned. And that's it from Explore the Earth. It was a great time, and bye bye.